Good morning, students. We will learn about cell, the unit of life, and today we will learn about electron microscopic structure of the cell. Okay, so electron microscope was discovered by Knoll and Ruska in 1932. When seen under the electron microscope, many details of the structure or structural organization of the cell become clear. Okay, and with the help of electron microscope we can see the things having size up to 0.025 angstrom, and it can magnify the structure 2 lakh to 2 lakh 50,000 times, and all cell organelles can be seen clearly through electron microscope. Okay, हम खुली आंखों से किसी सेल के स्ट्रक्चर को और उसके अंदर के स्ट्रक्चर को बहुत क्लियरली नहीं देख सकते, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसके 2 लाख या 2.5 लाख गुना बड़ा करके हम इसको देख सकते हैं, और उसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं उसको भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं. And we have already studied about the history and general structure of plants and animal cells. Therefore we shall study about the ultra structure of electron microscope structure of cells. Okay, and electron microscopic studies have related that a cell is made up of several components. Okay, look here, plant cell and animal cells is here present here, and we can see the cell is bounded by a cell membrane. All both cell, plant and animal cells, are bounded by cell membrane, and under cell membrane cytoplasm is present in many compartments like mitochondria, nucleus, chloroplast, sorry, and endoplasmic reticulum, and vacuoles are present here, that can we see clearly. Okay, so कंपार्टमेंट फॉर सेलुलर लाइफ क्या होता है? कंपार्टमेंट किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अलग अलग न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स वगैरह जो हैं, यानी एक बड़ा सा हम हॉल ले लें या एक बड़ा सा एरिया बाउंड्री वाल से घिरा हुआ जिसके अंदर कई कमरे हैं और हर एक कमरे में अलग अलग काम होता है. जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल का फूड सेल के लिए वर्क करने के लिए एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन होता है. क्लोरोप्लास्ट में फूड प्रिपरेशन होता है. न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल का कंट्रोल रखता है. ऐसे ये अलग अलग वर्क करने के लिए सेल के अंदर जो लिविंग फंक्शंस है उसको फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कंपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इसी को ही हम कंपार्टमेंटेशन कहते हैं. सो each cell of the living organism may be considered as a compartment enclosed by a continuous membrane known as plasma membrane. Okay, चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल में हो, ये बाउंडेड है. इस बाउंड्री वाल को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं. एंड दिस मेम्ब्रेन suggested the protoplasm within the cell and prevents it from mixing with the extracellular medium. Okay, and this helps the cell to maintain a collection of molecules and well regulated reactions. Okay, इसके अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं बहुत अच्छे से इसकी उपस्थिति के कारण हो पाते हैं. एंड this helps the cell to maintain a collection of molecules, and okay, and this is a sharp contrast to the more disorderly distribution and a random interaction of molecules in the extracellular medium, right? And but a cell is not
sealed in a compartment. In unicellular organisms, the plasma membrane allows selected materials to pass through the maintain internal composition, which is different from the surrounding medium. Okay, and in multicellular organisms, the plasma membrane maintain the individuality of the cell, but does not totally isolated it from the other cells. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मल्टीसेलर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें सेल जो है वो एक दूसरे से पर्टिकुलर इसकी इंडिविजुअलिटी भी होती है सभी ऑर्गन्स में, और ये एक दूसरे से के साथ भी होते हैं, बट ये टोटली एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए नहीं रहते, बट ये एक दूसरे के साथ रिलेशन भी बना के रखते हैं. इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू ये एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं. ओके, सब्सटेंस का ये आदान प्रदान कर सकते हैं. इन एनिमल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प द सेल टू रिकॉग्नाइज ईच अदर and aggregate to form tissues, and plasma membrane also allows to movement of not only certain material but also messages between the neighboring cells and between the cells and outside. Okay, and plasma membrane is the outermost boundary of cytoplasm in plant cells, is surrounded by a cellulose wall named as cell wall. प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और सेलुलोज का बना हुआ थिक वॉल प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड सेल वॉल. ओके, सॉरी. सो कंपार्टमेंट विद इन द सेल क्या होता है? द प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आल्सो कंटेन्स मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि अभी मैंने बताया, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज एक्सेट्रा, है ना. बहुत सारे इसमें छोटे 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 कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे बड़े जो भी. एंड दीज ऑर्गेनल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनी इंट्रासेलुलर compartments. Beside this, some other structure are not bounded by membrane such as centriole, ribosomes etc. इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं जो बाउंडेड नहीं होते हैं मेम्ब्रेन से, लाइक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल इन एनिमल सेल एंड राइबोसोम बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. Okay, and all these are specific structure and perform specific function. ये सभी जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब का वर्क बताया था, तो ये स्पेसिफिक फंक्शन को ये करते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेल वॉल इन प्लांट सेल्स, सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल्यूलोज का बना हुआ थिक वॉल होता है जो प्लांट सेल को स्टेबिलिटी देता है. Okay, so the cellular substance of plant and animal cells are enclosed by a very thin elastic and limiting membrane called as plasma membrane, and plasma membrane remains covered by cell wall in case of plant cell. Okay, and animal cells do not have a cell wall, thus outermost boundary of an animal cell is plasma membrane and cell wall is the outermost boundary of plant cell. Okay, sorry. So what is the definition of cell wall? All plant cells, either it is bacteria or it is fungi, algae and other developed plants, are bounded by a semi-rigid laminated non-living covering above plasma membrane. This covering is called this covering is called as cell wall. Okay, and in bacteria and blue green algae, cell wall is composed of mucopeptides, and in higher plants it is composed of cellulose, hemicellulose, pectin, lignin and
chitin. So what is the structure of cell wall? Cell wall is a secretory product of protoplasm of the cell. The plant cell wall can be defined into 4 layers: middle lamella, primary cell wall, and secondary cell wall, tertiary cell wall. Okay, and when we discuss about function of cell wall, the main function of cell wall is to provide mechanical support and rigidly to the plant cell. Like the skeletal of animals, cell wall act as skeletal framework of plant, and cell wall protect the cell from physical pressure, and it gives definite shapes to the cell. And cell wall is also involved on the movement of metabolites in and out of the cell. Let us discuss about cell membrane. In all types of cell, including prokaryotic and eukaryotic, plant and animals, the protoplasm is enclosed by a thin membrane which is called plasma membrane. It is present both animal and plant cells, and also present in bacteria, algae, etc. Okay, and it is also called cell membrane or plasma lemma, and it separated the cell from external environment, like protozoans. All protozoans, it protect the organisms from external environment, and also the other multicellular organisms it protect from external environment. The cell membrane can be defined as the outermost boundary of the cytoplasm of a living cell, which controls the entrance and exit of ions and molecules, and thus help in maintaining the difference in the ionic concentration of the cytoplasm and the surrounding medium. Okay, so the cell membrane is thin and not visible by light compounds microscope. Further, it is the living components and can be separated from the cell cytoplasm without causing injury and death of the cell. And it is flexible, dynamic and selectively permeable. Selectively permeable किसको बोलेंगे? ये अपने अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ही आने देता है, और अपने से बाहर जो चीज़ को भेजना है उसी को भेजता है. हर एक चीज़ को ना तो ये अंदर आने देता है, ना ये बाहर जाने देता है. ऐसा जो बिहेवियर है ये सेलेक्टिवली परमिएबल कहलाता है. ओके, एंड बिसाइड सेल मेम्ब्रेन, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम इज आल्सो फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, and which surrounds the vacuous and cell organelles. The cell membrane and the intracellular membrane are collectively known as biological membrane. Okay, सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट बना हुआ है उसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको कि प्लाज्मा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, एंड केमिकली ऑल द मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ lipoprotein, lipids and proteins. Okay, and therefore these are also known as lipoproteins membrane, and most of the modern cell biologists prefer to use the term plasma membrane, and as we say and learn, the plasma membrane is the composition of plasma membrane is two substance, protein and lipid and carbohydrates.
protein different types of membrane proteins have been found present: structural protein, enzymatic protein, and carrier protein. And the lipid are mostly in the form of phospholipid and sterols, glycolipids, and sphingolipids. And carbohydrate, the plasma membrane found in liver cells and RBCs contains hexosamine and fructose carbohydrate. Okay, so several models have been proposed to explain the molecular organization of cell membrane, and all the models given by various scientists to explain the structure of plasma membrane are classified into two groups: bilayer models and micellar or subunit model. In bilayer models, according to this concept, plasma membrane is composed of two separate layers of protein and lipid. And some models have been proposed to explain bilayer model, like protein lipid protein and sandwich model, and Daniel and Davison models, and unit membrane models, and penetrated protein models, etc. And the fluid mosaic model is most famous in scientists and accepted it by scientists. What is the fluid mosaic model? Fluid mosaic model of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972. Okay, according to this model, protein always does not form a sandwich covering the surface of bilayer lipid as suggested by Robertson. Actually, there are two types of protein: peripheral or extincting, and internal or intrinsic. The intrinsic protein are tightly held in place by strong hydrophilic or hydrophobic interaction, and it is difficult to remove intrinsic protein from the membrane, but the extrinsic protein are superficial and can be removed easily. Okay, some intrinsic protein remain embedded in the lipid layer and partially projected out, and some of the proteins are enzymes which allow entry to some required substance inside the cell. And the membrane of different cells are different in composition of protein and lipids, and the membrane also undergoes into various modification to perform various physiological functions. Okay, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में ये मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. इसमें प्रोटीन और लिपिड्स जो है वो रहते हैं. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो है वो लिपिड है जिसका हाइड्रोफिलिक जो एंड है वो बाहर की ओर, हाइड्रोफोबिक जो होता है वो अंदर की ओर होता है, लाइक दिस. एंड इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं. एक तो बाहर होते हैं जिसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, और कुछ जो है वो इसके अंदर तक धंसे हुए होते हैं, कुछ जो है इसके पूरे आर पार भी होते हैं. इनको आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता. ओके, सो दिस मॉडल आल्सो सेज द सेंट्रल बायोलिपिड लेयर इज phospholipid having spherical polar head and projected outside the two non-polar and tail group pointed inward. Okay, it is water resistant barrier through which only lipid soluble substance can pass. इसमें जो लिपिड में घुलनशील होते हैं वही सब्सटेंस जो है वो इसके पास कर पाते हैं. एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द larger intrinsic
protein which project but have channels by which water soluble substance can also pass. Okay, and cell membrane can be decided as protein and iceberg in sea of lipids. इसको ऐसा इमेजिन किया गया है कि लिपिड्स के आइसबर्ग में प्रोटीन जो है वो आइस के टुकड़ों के समान तैरते रहते हैं. And proteins extending from outside to inside are called tunnel proteins or transmembrane protein. So according to this model, structure of membrane is not static because of the fluidity of the lipid molecules and scattering of protein molecules like a mosaic according to its requirements. This model has been named as the fluid mosaic model, and this model is most widely expected model of plasma membrane as compared to यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट. ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.